a student student centric instructions that focuses on the measuring the performance of the students, that is the outcome. So in the teaching process, basically, what is the outcome? The outcome is only that what our students have done after their graduation. So this is basically the basic fundamental of the outcome based education, that our students results matters, their placement matters, their future matters in the outcome based education. Excuse me, sir, your So screen is outcome based, not visible. Your screen is not my visible. screen is, Screen Not is visible, visible, ma'am. but it is not visible on my computer. Okay, I will. Please check on your system, ma'am. It is visible, clearly visible on my laptop and Okay. also in my phone too. Yes, ma'am, it's visible. Yes, yes. Please continue, sir. okay. So the outcome based accreditation, mainly I'm talking about the NAC accreditation, that focuses mainly upon the evaluation of the outcome of the program through inputs, process and output parameters. So in outcome based education, there are three parameters, that is input, processes and output. Whereas in our traditional system or in our traditional educational system, we have only as the input as parameter. Whereas in the outcome based education, we need to take care about the inputs, the processes as well as the output. So what is OBE? OBE starts with a clear statement that what knowledge, skill and attributes the graduate will able to demonstrate as having acquired on the successful completion of a specific program of study, and these should be measurable. So outcome based education is basically resting on three pillars, that is knowledge, skill and attitude. So but all these knowledge, skill and attitude is measurable on what the student have gained after their year of graduation. Let us say if a certain student is studying in BSc non-medical, so what the knowledge he or she has gained during the entire 3 years of their study, is his or her skill is capable that he or she can be placed on a suitable job in which he or she can demonstrate his or her skills. And attitude, the word attitude here lies that is he or she fit for the adoption in the culture of the you can say company, is he or she can devote certain things to the society, what he or she can give to the society. So all these three parameters, knowledge, skill and attitude, need to be checked in outcome based education for a student who is graduating. And please, it should be measurable. हम किसी बच्चे को ये कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इट डज नॉट मीन पढ़ने में अच्छा. The good means something, me it could be have certain different meaning, for you it could be have certain different meaning. But if I say that this student is good in study because he or she has got 8 marks out of 10, then it means that it is a measurable scale. So all these parameters should be on a measurable scale, then only we can say that our OBE target have been achieved. So I request if anyone have any query during this, then definitely he or she can interrupt and ask, so that we can have it interactive session. Sir, though it's not a So query, but it's anything, a small request, sir. If you can please stop and then restart sharing your screen, because I think a lot of us are facing the problem in right, ma'am, seeing right, right. this. Thank you so much, sir.
Yes, sir. Now it is visible. Thank you, sir. It is Thank you, visible sir. now, sir. Visible, sir. So is it visible to all? Yes, Yes, yes. sir. Thank you so much, Yes, sir. sir. So shall I start from beginning or from here? I continue from here itself Continue as per from your wish. So I start from the beginning. So I request all of you that if you have any query, then we can discuss it along with. Absolutely no issue. Please interrupt me whenever we have certain discussion, because OBE is one of the thing in which no one can be expert. So it's a mutual, you can say, discussion. So today's our basically discussion will be on outcome-based education framework for the higher educational institutions. So what is the outcome-based education? So outcome-based education is the student-centric approach. In the earlier traditional approach, that is purely based on the faculty-oriented. But now this approach have changed, and this outcome-based education approach is truly the student centric approach, and the student outcome should be measurable. Whenever I am talking about the word measurable, it means that we have to measure each and every aspect of the student on a certain scale. Outcome based accreditation. Now here the accreditation means the NAC accreditation that is being done by the UGC for all the affiliating higher educational institute. So outcome based accreditation focus mainly on the evaluation of the outcome of the program through input processes and output parameters. So here in all the presentation, wherever the word program means, the program means that the degree in which the student is continuing for. If a you can say student is for you can say BSc agriculture, then program is BSc agriculture. If he is from BSc non-medical, then program is BSc medical. If it's MSc medical, then it is MSc medical. So program means the degree in which the student is going through. Now, in the outcome-based education, we have to take count all the three parameters, that is input, that what the input of the students is coming, process means that how we are teaching to the student. What are the different aspects that we are adding to boost these students to study? And the output parameters means that after his graduation, after his study, graduation or post graduation, in whichever stream he or she is taking about, then after graduation or post graduation, what is the output? Whether we make that student capable for the job if he want to do the job, whether we you can say made the student capable of doing certain business if he is capable to do so, means after doing his program, the student shall have a sufficient skill so that he can be self-sufficient, whether it's in a job, whether it's during entrepreneurship, or even for higher studies. If we want to opt for higher studies, whether the student have the sufficient knowledge that he can process on the higher studies. Now, the OBE is based on three pillars of knowledge, skill, and attitude that the student must gain after the completion of the program. OBE clearly states that whenever the student is graduating from any institution, then he must have the sufficient knowledge so that he can work upon the you can say he can work upon the knowledge which he has or she has gained during his study. Then skills. The skills means the practical skills that he or she has gained during the entire core of study so that he can implement to the real world. And the attitude. The attitude means that the real behavior, is there any behavioral change? Is there any social change that the graduate have
during its course of the study, and it should be measurable. Measurable means we have to make certain scales on which that outcome should be measurable. The outcome could be in the knowledge, outcome could be in the skill, or outcome could be in the attitude. Any discussion up to that? So the next is the basic fundamentals of outcome-based education lies on the program learning outcomes, course learning outcomes, and these are related to the vision, mission, and PEO statement. Basically, vision, mission, PEO, course learning outcome, and program learning outcomes are the basic tools to measure the outcome-based education, and all these 5 terms are interrelated. Now, all these terms relate with each other through the inputs from the various stakeholders. Whenever I talk about the stakeholders, then here the stakeholders means internal stakeholders as well as external stakeholders. The internal stakeholders are our students, our faculty members, our staff members, our management, or anything which are internally related to the you can say progress of the students. Whenever I talk about the external stakeholders, then the external stakeholders means the industry in which the students are going after their study. You can say the if the students are becoming entrepreneur, then the external stakeholders are the various society members. The external stakeholders may be the alumni, which have already passed out. So we have to take the inputs from all the stakeholders to decide that what would be our vision of the institute and the department, what would be our mission of the institute and department, what are our program educational objectives, what are the course learning outcomes, and what are the program learning outcomes. So anything? So before going further, I want to have little bit discussion on, I have used 2 words. One is objective and one is outcome. So I have used that PEO means program educational objective, and CLO or PLO means course learning outcomes. So what basic difference do you think there between objective and outcome? Anyone? Sir, objective Yes, is sir. what we are intending to teach our students, or what we are trying to give them in the during the courses and the programs. And outcome is what the students actually take away from that course. Exactly. So very well said, that outcome is what we expect to deliver to the students. That is our objective. Our objective is to make these students knowledgeable, right? Or if I go to the class, then my objective is that each of the students score at least 60% of marks in my course. That is my objective. And outcome is that when actually the result come, then let us say 80% of the students have scored 60% marks. It means that there is always a gap between objective and outcome. So is it true or not? Very Yes, So sir. always Yes. when we have certain objective, then it might be true that that objective cannot be fulfilled as outcome. There is certain gap, right? So outcome based education, the clear mandate of outcome based education is that whatsoever your objective is, it should definitely match with the outcome. कि हमारा जो ये बीच का गैप है आउटकम और ऑब्जेक्टिव के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, द ऑब्जेक्टिव इज दैट माय ऑल स्टूडेंट्स मस्ट गेट 60% मार्क्स, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, बट आउटकम इज only 80% students got my 60% marks. It means that those 20% students that remains in between,
So those students may not get that level of knowledge so that my objective can be equivalent to outcome. So it means what? That I need to process all on those 20% स्टूडेंट. मेरे को उन 20% स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी. मेरे को उन स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मेरा ये जो 20% का गैप है ये गैप नहीं रहे. और वो मैं मेहनत कैसे, मेरे को कैसे पता लगेगा कि ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ स्टडी मैं बच्चों से पूछूं कि भैया आपको क्या दिक्कत है, आपको समझ आया नहीं आया. आई वुड टेक देयर टेस्ट, आई वुड टेक देयर असाइनमेंट्स so that gap should not be there between the objective and outcome, and this is what the outcome based education is. Sir, जी sir, good afternoon, sir. Sir, my name जी is good Chetan from DAV College, Abohar. Sir, from up to this discussion, we can say that objective is future oriented, right? Objective is a kind of, we can say, a standard. And when we will have the outcome, we can compare the outcome with the standard we set in the past. Is it true? Basically I will give you one example. So every one of us are doing certain lab experiment. Right, So in sir. the lab experiment, what we state that these objective of this experiment is this, right? Any objective is depending upon that my objective is this. Then we do all the experiments and all, and in the last we write that this is the result, Mhm. right? That our objective is that say I am doing certain chemistry experiment, then I should get the red flame, and my result is that I am getting the yellowish flame. Means objective is a certain thing, exactly you rightly said, that is standardized, that we actually want from our experiment, but result is due to the gaps. कि हमारा हो सकता है कि उस टाइम हमारा टेम्परेचर सही नहीं हो सकता है कि हमारा कुछ केमिकल कम डल गया, ज्यादा डल गया, उस वजह से द रिजल्ट वुड वेरी. Clear? So it means that outcome is our objective is our standard. Outcome is whatever we are getting. So the outcome based education is that we make the process in such a way that whatsoever is the standard value that we will get as the outcome. Right, sir. Right. So to do that, the various inputs are always required. Inputs from the various stakeholders. That is essential part in case of outcome-based education. So now the outcome-based education emphasis on starting what you want your students to be able to do end of the program. So being a faculty member, I think this is for faculty members only. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes. Yeah. So being a teacher, we all are a faculty member, we all are a teacher. First of all, being a faculty member, being a teacher, I must be aware that after I teach this specific course, first of all, I am talking about course. Program बाद में आते हैं. कोर्स मीन्स सब्जेक्ट जो मैं ले रहा हूं, एंड प्रोग्राम मीन्स मैंने आपको बताया सारे कोर्स को मिला के जो पूरी डिग्री होती है, दैट वी कॉल एज प्रोग्राम. जैसे हम इंजीनियरिंग में, माय प्रोग्राम इज सिविल इंजीनियरिंग एंड माय सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. सो कोर्स इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. सो when I start teaching certain course, then before starting the course, I must be very clear that after doing this course, my students will able to do this. So this is what we called as course learning outcomes. I must be very clear कि अगर मैं अपने बच्चे को ये कोर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेटर से कि मेरे को इंग्लिश में किसी ने पढ़ाया, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर मैं अपना ये इंग्लिश का कोर्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद बच्चा ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं करेगा. So the course learning outcomes must be clear to each and every faculty when he start teaching the course. Similarly, when we combine all these courses, then the head of the department or the head of the institution must be aware
कि मेरा ये बच्चा यहाँ से एक ये प्रोग्राम करके चला गया, ये डिग्री करके चला गया, एमएससी बीएससी कुछ भी करके चला गया, इसके बाद इस बच्चे में इतनी स्किल्स हैं, इतनी नॉलेज है कि वो ये काम डेफिनेटली कर सकता है. सो दैट इज द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. सेकेंड इज टू असेस कि हमने वी हैव एक्सपेक्टेड that the student must be able to do this. So now, is the student is capable of doing this or not? So we have to assess. And the third part, the very important part, orienting teaching and other academic processes to facilitate student to do what they are expected to do. If we are expecting our students कि उसमें ये नॉलेज आनी चाहिए, ये स्किल्स आना चाहिए, अगर वो स्टूडेंट में स्किल्स नहीं आया, then it means that there is a need to train our faculty members. There is a need to apply certain other academic processes to our faculty members. It is the need to orient our teaching. It might be possible that टीचर बहुत अच्छा हो, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट उसकी मेथडोलॉजी कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो, जिस वजह से हम उस आउटकम पे स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए. सो इट इज वेरी essential कि first of all we should know that what our students will be able to do after this course or program. Then we need to assess, and then third is कि if there is certain gap, then we need to orient teacher and academic processes. Now the most important part is basically what actually practically what is the difference between traditional educational system and outcome based education. I think you agree with me कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जब मैं पढ़ाता होता था, तब मेरी एक थिंकिंग ये रहती थी कि सर मैं क्लास में टाइम पे पहुंच गया, मेरी क्लास में 2 बच्चे आए तो भी मैं ठीक है, 10 बच्चे आए तो भी मैं ठीक हूँ, 50 बच्चे आए तो भी मैं ठीक हूँ, लेकिन बिकॉज मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है कि बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा. इज इट ट्रू? Yes, sir. हेलो. Yes, Yes, sir. Right, sir. Right. राइट. हमारा है. और दूसरा हमारा बिल्कुल ये होता था कि सर देखो, अभी किसी डायरेक्टर ने या एज ए डीन मैं फैकल्टी को बुलाता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका लेटर से 60% से कम आया है ना. तो देन द ऑब्वियस आंसर इज फ्रॉम द फैकल्टी साइड कि सर 100 मार्क्स का पेपर था, ये देखिए कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया. अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाता तो उन 10 बच्चों के भी 95% से मार्क्स ऊपर नहीं आते. मैंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, तो ये बच्चे नहीं पढ़े, दैट आई कैन नॉट डू. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो ये 10 बच्चे बता रहे हैं कि मैंने अच्छा पढ़ाया, इसीलिए ही इनके 95% मार्क्स आए. राइट. दिस इज बेसिकली वी ऑल आर टीचर्स, दिस इज आर बेसिक टेंडेंसी, और ये ठीक भी है कहीं जगह. बट आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहता है कि यू शुड नॉट बी फैकल्टी ओरिएंटेड. आपको फैकल्टी ओरिएंटेड नहीं होना है. आपके 10 बच्चों के 95% मार्क्स आ गए, दैट्स गुड, बट द कंसर्न इज outcome based, according to outcome based education, that out of 100, if all the 100 students got 60% marks, then it's very good, instead of कि आपके 10 बच्चों के 95% मार्क्स आए और उसमें से और 20 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए. नो, all the students should reach certain threshold limit. So this is the basic shift between the traditional education system and the you can say outcome based education system. Sir, I have a question. जी ma'am, please. So there are few students in the class whose attendance is 0 or very less, and then they fail in the exam. So how can we justify their result? Madam, this problem is basically, I think, not yours, it's all over India problem.
है ना, कि ये सब जगह ऐसा ही है। इवन किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे कि बच्चे क्लास में आते नहीं हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम या आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि उनको हम रिजल्ट लेके आए। सो इफ यू गो थ्रू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी थॉरली, देन उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है that there should be the paradigm shift from our traditional teaching system to you can say the outcome based education system। उसमें क्या है कि हम बच्चा नहीं आ रहा है, हमने 10 बार फोन किया, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, देन हम इंस्टेड ऑफ के उसको ऐसे ही छोड़ दें, देन वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन अदर टेक्नोलॉजीज। अदर टेक्नोलॉजीज मीन्स कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ थ्रू जूम मीटिंग, तो हमने उन बच्चों के साथ भी हमको व्हाट दी आउटकम बेस्ड एजुकेशन सेट कि हमको उनके साथ किसी और मेथड से इंटरेक्ट करना है, किसी और मेथड से उनके साथ डिस्कशन करनी है, सो दैट वी में अल्टीमेटली हमारा गोल उनको पास करवाना है, उनको 60% मार्क्स तक लेके जाना है। सो नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने वो क्लास में नहीं आए, आपने या वो पढ़े नहीं इस वजह से फेल हो गए। द रिजल्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैकल्टी दैट इज टीचिंग द सब्जेक्ट, राइट? So basically the outcome based education is basically three parameters that I have already discussed: input, process and output, whereas the traditional is only the input and processes। मेरे पास बच्चा आ गया, that is input, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, that is process। बस इसके बाद क्या रिजल्ट आया वो ट्रेडिशनल सिस्टम में मैटर नहीं करता था, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ा या नहीं पढ़ा। बट हियर इन द आउटकम बेस्ड एजुकेशन वी ऐड वन मोर एरो, दैट इज इनपुट, प्रोसेसेस एंड थर्ड एरो इज outcome। एग्जैक्टली। सो वी नीड टू गेट द आउटकम, मतलब हमारे पास, हम सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ सकते हैं कि सर बच्चा आया, हमने पढ़ा दिया, बस हमने अच्छे से पढ़ाया, आप कैसे भी कर लो। नहीं, जब तक उस बच्चे को आउटकम नहीं है तब तक हमारा पढ़ाया नहीं पढ़ाया कुछ किया हमारा सब वेस्ट है। हमारे पास बच्चे की क्वालिटी अच्छी आई, कम अच्छी आई, पढ़ने वाले बच्चे आए, नहीं पढ़ने वाले बच्चे आए, नहीं, whatsoever the quality we are getting, ultimately we have to take to that level कि वो आउटकम निकाल सके। Clear? So, in this, there is the faculty program curriculum. We need to basically those who are the autonomous institute, they can design their curriculum accordingly. They can add their experiments in the labs accordingly. They can use the other resources. Other resources means certain computer-based learning, so that ultimately what the matter is, that is the outcome. Right? The in the traditional system, the assessment is mainly through the exams, that is internal exams and external exam and assignment, right? So that is what the most of the colleges are doing कि इंटरनल एग्जाम ले लिए, एक्सटर्नल एग्जाम यूनिवर्सिटी ने ले लिए और हमने असाइनमेंट दे दी, वहां से हमने असेस कर लिया बच्चे को। दैट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम। बट इन द आउटकम बेस्ड सिस्टम, वी विल डिस्कस in the next slides that there are many other parameters on which the students need to be measured, right? So quality control through teaching evaluation system, right? Now a big question mark for you, that there are two words, one is quality control and one is quality assurance. Can anyone suggest the difference, what is the quality control and what is the quality assurance? Hello, Hello. anyone? Good afternoon, sir. Good afternoon. सर क्वालिटी कंट्रोल में एक्चुअली होता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग टेस्टिंग के थ्रू से करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो टैबलेट मेकिंग मशीन में जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जो है क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं, मतलब टैबलेट मतलब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, उसका कितना परसेंटेज है,
वो जी मशीन बेस्ड जो है उसके बेसिस पे हम टेस्टिंग करते हैं। बट क्वालिटी एश्योरेंस में ये होता है कि जितने भी प्रोसेस भी उसका डॉक्यूमेंटेशन हमको जो है उसमें करना होता है मेरे ख्याल से। सर Anyone may else? I? सर क्वालिटी जी सर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम बेसिकली जो डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको हम प्रिवेंट करते हैं और Yes. क्वालिटी कंट्रोल में हम करेक्ट करते हैं। राइट जैसे हम यूनिवर्सिटीज में एसओपी बना देते हैं, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। जी। एंड क्वालिटी कंट्रोल? सर सपोज जैसे कि बच्चों की अटेंडेंस अगर कम है तो करेक्टिव मेजर के लिए अगर हमने कुछ और एक्स्ट्रा करा तो जब तक डिफेक्ट्स को देखो कम फुल करने टाइम जूस पीने का है क्या? राइट। सो बाहर निकलेगा उधर उधर होगा ना किले के बाहर रेस्टोरेंट वगैरह। I will give you one very good example regarding the गेट पे है सब कुछ मिलेगा रेस्टोरेंट आपको जो भी मिल जाएगा। regarding the quality control and quality assurance के इनमें difference क्या है? रेस्टोरेंट है प्रियंका सारस्वत मैम आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। सिर्फ वो बता रहा है लाइक और तो वाला तो मुश्किल है। चलिए फिर इनके साथ ही जब वहीं देख लेंगे रास्ते में कहीं आएगा। I request all the participants to please mute their mic. Only unmute when discussion is there. किले का थोड़ा साफ होता है ऐसा लग रहा है। इतना रुकता है 10 मिनट और 1 मिनट पकड़ो अच्छे से। So I will take one very good example which will clearly explain what is the difference between quality control and quality assurance. So first of all, you can see two colors. Quality control is in red color, quality assurance is in green color. Means that quality control is what we are doing in our conventional or traditional educational system, and quality assurance is what we are doing in our outcome based education. Now quality control, बेसिकली लेट अस से कि एक जो अभी कोरोना काल आया, क्लियर, बहुत हम सब ने काफी बुरा टाइम देखा। सो लेट अस से कि किसी कोई पेशेंट की किसी की डेथ हो गई, राइट। सो डेथ के बाद हम क्या करते हैं या डॉक्टर क्या करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। एंड पोस्टमार्टम करने के बाद दे फाइंड कि इसकी जो डेथ हुई वो किस वजह से हुई, क्लियर, और उसको हम आगे इंप्लीमेंट करते हैं ताकि कोई भी और डेथ इस वजह से ना हो। दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। द क्वालिटी कंट्रोल मींस we are controlling after the damage have been done on one part so that it could not be transferred to other। कि एक क्लास का रिजल्ट मेरा खराब आ गया, उसके बाद मेरे को ये पता लगा ओहो ये तो यार मैंने ये चैप्टर तो करवाया ही नहीं था और इसी चैप्टर में से सारा आ गया, मैं इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता था लेकिन पूरा चैप्टर ही आ गया। दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। मीन जिसका खराब होना था उसका तो हो गया, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि मैं बाकियों का अगले जो बैचेस आएंगे उनका नहीं होने दूंगा, बट द डैमेज हैव बीन डन टू वन बैच। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद हम असेस करते हैं कि ओहो इस बच्चे का तो कम हो गया, क्यों कम हुआ, चलो हम देखते हैं, वी टुक द मीटिंग एंड फाइनली हाँ ये इस वजह से कम हुआ, चलो अगली बार हम ये क्वेश्चन ज्यादा दे दिया करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। In the quality control, the damage have been done already to one part of the group, whereas in the quality assurance we need to check at every point कि before the final examination we have to check at 5 points कि पहले हम चेक करते हैं कि एक पॉइंट पे ये बच्चा ठीक है, नहीं ये 10 बच्चे ऐसे हैं जो इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाए, देन आई हैव टू पुट मोर अटेंशन ऑन दोज 10। देन आफ्टर सेकेंड चेक आई हैव टू पुट दी अटेंशन कि नहीं ये बच्चा 2 बच्चे ठीक हो गए लेकिन ये 2 बच्चे और आ गए। लाइकवाइज आई हैव टू कंप्लीट ऑल दी स्टेजेस so that my final result should not be disgusting। that is what we called as quality assurance। so पहले हमारे पास अभी जो हमारे जैसे I am IQAC director, so IQAC means internal quality assurance cell, it is not the quality control cell। so it's a big shift between earlier it was quality control
and now it is quality assurance. So we need to assure our quality during the tenure of the teaching so that the damage could not be there. I think it's clear. Sir, we can say that the meaning of quality control is to check what the damage has already been done and how it can be, how to stop not to happen it in future. But quality assurance means there is no damage at all. Exactly. Very true. Quality control means that we are preventing, madam have exactly used the word preventing. Quality control means we are preventing what have already happened to maybe even to one student. कि ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ वो बुरा हो गया है, आगे हम ये चीज नहीं करें. So that is quality control. We put the action once it has been done. किसी भी, चाहे वो बच्चे के साथ किसी भी चीज. एंड क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कि हम किसी चीज के साथ भी ऐसा होने ही नहीं दें. राइट सर, राइट. द बेस्ट एग्जांपल के हमारे पास यहाँ पे इंडिया में मेनली कोरियन गाड़ियां चलती हैं और कोरियन गाड़ियां चलती हैं और जापानीज गाड़ियां चलती हैं. बोथ आर बेस्ड ऑन, वन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड वन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एश्योरेंस. एक आदमी जो जापानीज है वो कहते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को पहले ही इतना टेस्ट करेंगे कि ताकि हमारी जो गाड़ी आएगी वो हमारी बेस्ट गाड़ी आए. क्वालिटी कंट्रोल दैट वी आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग so that our final product would be the good one. So but in educational system, quality control is traditional and quality assurance is outcome based education. Right? So in the traditional education system, what are the various deficiencies? The students always depend upon their teachers in every study related matters. On every study related matters, the students are always dependent on their teacher. And there is lot of lack of emphasis on skill development, communication skills, interpersonal skills, analytical skills, working professional ethics, lifelong learning, sensitivity to environment. ये हम कुछ नहीं बताते थे उनको, हमारा काम था. In the traditional system, एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ. In the traditional system, the faculty goes in the class to cover the syllabus. Are you getting my point? कि ट्रेडिशनल सिस्टम में फैकल्टी क्लास में जाती थी कि मेरे को सिलेबस कवर करना है. एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन में फैकल्टी क्लास में जाती है कि मेरे को सिलेबस को अनकवर करना है ताकि वो बच्चों को समझ आ जाए. सो देयर इज अ शिफ्ट बिटवीन कवर दी सिलेबस, फटाफट कवर करना है ताकि कोई ये ना कह दे भी इतना छोटा सेमेस्टर है, इतना छोटा साल में कम क्लासेस लगती हैं एंड आई हैव टू कवर इट. बट this in the outcome based education, I am not going to cover the syllabus. I am going to uncover it so that the students could understand कि भैया इसमें syllabus में है क्या. Right? I think it's clear. So in the outcome based education, the educational process is directly focusing on the outcome and the key things that the students should be understand and able to do up to the competency that the student have developed in between through the faculty members. के faculty members ने उसमें जो भी competency develop की हैं वो student उसको use करे. That's why in the first lecture it is emphasized in the outcome based education कि आप पहले लेक्चर में उनको बिल्कुल ये मत बताइए कि हम सिलेबस में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं. नो, द फर्स्ट लेक्चर शुड बी कि हम इस सिलेबस करने के बाद बेटा आपको ये चीजें आ जाएंगी. सेकंड थिंग आपने उसी लेक्चर में ये बताइए कि ये करने के बाद आप सोसाइटी को, आप इस कोर्स के बाद आप इन चीजों में मदद कर सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we should teach what are the professional ethics, what are the interpersonal skills, analytical skills along with our regular course. So outcome based education is a closed loop system that is say what you do.
do what you say, prove it and improve it. So it's a continuous quality improvement system that आप बच्चों को बताएं कि आप ये कर सकते हो। बच्चों को बताया, आपने सिखाया, उसके बाद आप बच्चों को कहें कि नाउ डू, जो आप कर सकते हो, फिर उसको प्रूव कीजिए और उसमें जो भी गलती है यू हैव टू इम्प्रूव इट, राइट? So I think now we are able to understand the difference between the traditional education system and outcome-based education system. Any, you can say, query up to this point? नो सर। सर क्वेरी तो नहीं है, बट एक बात ऐड करना चाहूंगी मैं। जी मैम। जो आपने अभी बताया कि क्लास के फर्स्ट डे हमें ये नहीं बताना चाहिए कि क्या पढ़ाएंगे, ये बताना चाहिए कि इसको पढ़ के क्या फायदा होगा। जी जी। स्टूडेंट्स कई बार 50% सिलेबस हो जाता है क्लास में, उसके बाद पूछते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ के क्या फायदा होगा हमें। तो वही तो ना मैडम, अगर हम फर्स्ट डे पहले, ही बता दे तो ज्यादा बेटर है। हमको सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बच्चे को, आप बीसीए करवा रहे हैं, बीसीए करवाने के बाद हम बच्चे को अगर पहली क्लास में उसको ये बता दे कि बेटा बीसीए करने की, या मैं बीसीए में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ये पढ़ने के बाद आपको ये फायदा होगा, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अक्सर क्लास में हमारे इंजीनियरिंग में, बिकॉज आई बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पहली फर्स्ट क्लास में बच्चा आता है, वो कहता है जी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा कहता है मैं केमिस्ट्री क्यों पढूं, केमिस्ट्री तो मेरे आगे कोई भी काम नहीं आनी है। इसलिए वो केमिस्ट्री की क्लास को अटेंटेटिवली नहीं पढ़ता है। अगर उसी की बजाय कोई प्रोग्रामिंग की क्लास है, देन वो उसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ता है। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री की क्लास में उसको ये बताएं कि बेटा ये केमिस्ट्री की क्लास आपकी सिर्फ इसके लिए नहीं है, आपकी उस केमिस्ट्री की क्लास का आपका लाइफ लॉन्ग में ये बेनिफिट रहेगा, देन माइट बी कि वो उस चीज को ध्यान से पढ़े। तो अलोंग विद के हमने क्या पढ़ाना है, उसकी बजाय सबसे पहले हम ये बताएं कि हमने क्यों पढ़ाना है, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है और इससे आप क्या स्किल्स गेन करोगे। हम हर चीज सिर्फ पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए नहीं करवाते हैं, कुछ चीजें हम स्किल्स के लिए भी करवाते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंटल स्टडीज को, वैल्यू एजुकेशन को, इनको कंपलसरी किया है। उसका कोई बेसिक पर्पस नहीं है, उसका पर्पस ये है कि बच्चे में कुछ मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए, जो आजकल संस्कार जिसको हम बोलते हैं, जो बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो हमको मॉरल वैल्यूज, मॉरल एथिक्स, सोशल वैल्यूज, ये सिखाना भी हमारा फर्ज है अलोंग विद द पेरेंट्स। बिकॉज जब बच्चा हमारे पास कॉलेज में है, देन वी आर दी, यू कैन से दी टेक्निकल गार्डियंस ऑफ दैट स्टूडेंट। तो हमको उसको अलोंग विद other knowledge, we have to give this knowledge. So we will move forward. I think this session is up to 3:30. Hello. Yes sir. Yes sir. So Yes, sir. I need Yes, to sir. take it I need to take it little fast. So the basically OBE is defining the vision, mission, PEOs, then program learning outcomes and the course learning outcomes. So we will discuss one by one this part, because otherwise this is a very big session. I can take the complete day on this outcome based education. So at the institution level, the vision and mission is the guiding stars of the institution. This is very important. Vision एंड मिशन आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, लेकिन मतलब बहुत कम फैकल्टी, बहुत कम टीचर्स उसको अच्छी तरह देख पाते हैं या उसको समझ पाते हैं। बेसिकली द विजन इज, फॉर एग्जाम्पल, the government have certain vision, the prime minister, honorable prime minister have certain vision कि अप टू 2047 मेरे को इंडिया को यहां तक लेके जाना है। सो दैट इज द विजन, दैट आफ्टर 20 years द विजन कुड नॉट बी ए ईयर गोल। ये कोई 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 5 वर्षीय योजना नहीं हो सकती। द विजन इज ए लॉन्ग टर्म गोल कि मैं आज, मेरा इंस्टीट्यूशन रोहतक में अगर नंबर 1 है,
तो मेरे को इस इंस्टीट्यूशन को रोहतक में नंबर 1 नहीं करना है, मेरे को अगले 10 साल में इस इंस्टीट्यूशन को हरियाणा में नंबर 1 करना है। सो दैट इज माय विजन। जब मेरा वो विजन अचीव हो जाएगा, देन आई हैव टू मेक इट द इंडियाज नंबर 1। सो दैट इज द विजन। सो विजन इज what we are thinking for about 10 years, 15 years and 20 years, and mission is the guiding way कि अगर मेरे को अपने इंस्टीट्यूशन को नंबर 1 करना है इन यू कैन से हरियाणा, अभी मेरा रोहतक में नंबर 1 है, तो हरियाणा में नंबर 1 करने के लिए मेरे को क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, विच ट्रैक आई हैव टू फॉलो, क्या क्या मेरे को उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। मेरे को अपनी रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को अपना प्लेसमेंट बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को यहाँ पे कंपनियों को बुलाना पड़ेगा, लाइकवाइज। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मिशन। Then the third is PEOs. PEOs are the program educational objectives. So again, in this the word is objective कि जो मेरा बच्चा, my student is doing graduation as BSc honors in you can say non-medical or engineering or MSc in mathematics, then after completing his MSc in mathematics in 2 years or 3 years, objective is just after passing the degree in 2 years or 3 years, whether he has gained that things or not, whether the objective for which he has chosen the MSc mathematics, उसने एक MSc mathematics चुना, उसने रोहतक का नंबर 1 कॉलेज चुना, उसने अबोहर का नंबर 1 कॉलेज चुना, तो वहां से क्या वो उस टारगेट तक पहुंचा 2 या 3 साल में, दैट इज ऑब्जेक्टिव। वेयर एज द आउटकम इज कि उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग इसके ऊपर आउटकम के ऊपर चलेगी। So vision is the futuristic statement that the institution or department would like to achieve over a long period of time, and mission is the means to achieve the vision. विजन हमारा फाइनल है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिशन। क्लियर? सो ऑलवेज कीप द विजन हाई एंड इट शुड बी अचीवेबल। ऐसा नहीं हो कि मैं कह दूं कि मेरे को वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनना है और अभी मेरे को कोई अपने यू कैन से सिटी में ही कोई नहीं जान रहा है, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल। एंड द विजन शुड बी क्लियरली अचीवेबल। ऐसा होना चाहिए कि जो अचीव हो सके। इट शुड नॉट बी ओनली थ्रेटिकल। बनना तो हर आदमी अंबानी चाहता है, लेकिन कितने लोग बनते हैं वो बात है। तो हमको अचीवमेंट उतना ही करना है कि हम पहले ये बनेंगे, देन ये बनेंगे, एंड देन इन द लास्ट स्टेप अगर हमें पूरा कर लेते हैं, देन maybe we can reach up to that level. So vision statements help in defining the aspirants, and to remain focused shall be written in a simple language, easy to communicate, and should define the objective which present near future of the institute. And vision statement is a dream of where one want our institute to be for all the stakeholders, right? कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स आई ऑलरेडी डिस्कस कि मेरे सारे स्टेक होल्डर्स कहां तक पहुंचना चाहते हैं, दैट इज आर विजन स्टेटमेंट। सो हाउ टू फॉर्मुलेट विजन स्टेटमेंट? सो आई थिंक आई एम skipping that. So it's we use the bottom up approach, involve all stakeholders. So because that is also a complete one session. Then PEOs, the program educational objective, they should be goal driven, stakeholders input, and broad and achievable. Excuse me, sir, can I ask one question, please? Yeah, please, ma'am. Sir, in some university syllabus, I have seen they have also mentioned about PSOs, program specific objective. So is it same as program education objective? Ma'am, PSO is program specific outcomes. It is not program educational objective. Let me correct you. So PSO is different from PEOs in the way that PEO means that these are our program objectives which should be achievable within 2 to 3 years of graduation. कि 2 या 3 साल में अगर मेरा बच्चा ये चीज अचीव कर लेता है, दैट इज माई PEOs. PSO मीन्स, मतलब बिल्कुल क्लियर आप एक वर्ड समझिएगा PSO का मतलब क्या है. Let us say I take the example of MSc Math.
Now, in MSc Math, I'm taking the example of MSc Chemistry, right? I think BSc Chemistry. MSc में तो I think specialization आ जाती है organic, inorganic. I take the example of BSc Chemistry. Now, in BSc Chemistry, the student could have the inorganic chemistry also, it could have the organic chemistry also, and it could have the physical chemistry also. Am I right? Now, Right. you are conducting one course, one program of BSc Chemistry in your college, and you have, let us say, 10 faculty members. आपके पास 10 faculty members हैं, and out of those 10 faculty members, 6 faculty members are from the organic chemistry stream. आपके 10 फैकल्टी मेंबर्स में से 6 ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं और जो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कराते हैं. इट मींस that your PSO for BSc chemistry will be that our department is specialized, or my specific department is specialized in organic chemistry. That is your PSO. PSO means the strength of the department. Let us say if any department have you can say very good labs related to one subject, then it is its PSO. PSO So can I means say PSOs are the USP of that program? exactly the USP, or you can say it is the main strength where the student can get the maximum job. कि मेरे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी को बच्चा चाहिए तो वो मेरे पास आए, क्योंकि वो सबसे अच्छे बच्चे मेरे पास मिलेंगे, बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय डिपार्टमेंट. Okay, thank you, sir. So the PEOs are the statement that describe the expected, as I have already told you, that it is nearly between 4 to 5 years of graduation. कि 4 या 5 साल ग्रेजुएशन के बाद मेरे बच्चे ने क्या पाया, that is called the PEOs, right? The PEOs may be guided by the global and local needs, vision of the institute, and the long-term goals. PEOs are not the long-term goals, but they are reflecting the long-term goals, like stakeholders I have already discussed. So processes we are not going now. Then PLOs. PLOs are the program learning outcomes. So program learning outcomes is basically based on what the student gain the knowledge, skills, attitude. Now, please note that when I am talking about outcome-based education, then I have used 3 words only. कौन कौन से यूज किए थे? नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. लेकिन यहां पे एक और वर्ड ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूज. क्लियर? तो ग्रेजुएट जो एट्रीब्यूट्स हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन सेज ओनली नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, वेयर एज ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि आपने ये सब चीजें तो देनी है, लेकिन बच्चे में आपने ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज ये भी देनी है. ये मत सोचिए कि ये फैकल्टी का काम नहीं है वो देना, वो पेरेंट्स देंगे. नो, इट इज द रोल ऑफ द फैकल्टी टू प्रोवाइड द वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स, वेदर it is related to the moral values, human values, societal values. So all these values need to be inculcated by the faculty member itself, right? So course learning outcomes after the course, at the end of the course, what the student will able to do, that is called the course learning outcomes. So that was the second part of this discussion. Am I clear with this part? Something we need to discuss? Then we will move to the third part, the Bloom taxonomy. Any discussion, any doubt up to this point? No, sir. No. No, So sir. next we will discuss the Bloom taxonomy. I think many of you are aware with the Bloom taxonomy or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yesterday there was session about this. Okay, there was a complete session about this. So 2 very days good. before we had a lecture on this. Okay, but 2 days before you have a lecture on Bloom taxonomy. So I will not going then so much detail on the Bloom's taxonomy. So Bloom taxonomy is given by Benjamin Bloom, but which were later you can say reformed by Ederson, and
this Bloom taxonomy that we are using is the 21st century perspective by Ederson. But Ederson was so kind enough, क्योंकि Ederson जो है वो इसका स्टूडेंट रहा है ब्लूम का, देन उसने अपनी टैक्सोनॉमी को ब्लूम टैक्सोनॉमी ही कहा है. ही हैव नॉट चेंज द नेम ऑफ द टैक्सोनॉमी. सो बच्चे ऐसे होने चाहिए कि जो टीचर का क्रेडिट है उसने कहा है कि मैंने क्योंकि टीचर की रिसर्च को ही आगे बढ़ाया है, so I am not giving my name to anything, but it was later given by Ederson. So in the Bloom taxonomy, there are three domains, that is the cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain. So cognitive domain is basically the knowledge base, psychomotor is the physical skill, and affective domain is the emotional base. So if you have the complete session, then we will not go through much of this. So what is the use of the Bloom taxonomy in OBE? मैं OBE में Bloom taxonomy की बात क्यों कर रहा हूँ? Why I am using these? Because whenever I need to frame my vision of the institute, whenever I used to define my learning outcomes, course learning outcomes, my program learning outcomes, whenever I need to frame my PEOs, PSOs, then मेरे को वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का लेवल कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा. आई नीड टू गो फॉर ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल. अगर मैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल ध्यान नहीं रखता हूं, देन आई विल नॉट एबल टू जस्टिफाई विद माय विजन, मिशन एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर in this you can say session. We are discussing the Bloom taxonomy, right? So Bloom taxonomy is very important part in your setting of question papers also. Please note, whenever you are you can say setting your question paper, then that is very important to use the proper verbs as per the Bloom's taxonomy. So basically the affective domain and psychomotive domain is not our part. We are basically dealing with only the cognitive domain, that is the knowledge based domain, right? So हमेशा ऐसा होता है कि बच्चा फिजिकली मेरी क्लास में बैठा है लेकिन मेंटली वो किसी मॉल में घूम रहा है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द अफेक्टिव डोमेन, कि उसका माइंड कहीं और चल रहा है, इमोशंस कहीं और हैं, लेकिन फिजिकली वो मेरी क्लास में बैठा है. देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी क्लास में जो बच्चा बैठा है उसने कितनी नॉलेज ली. दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डोमेन. इन द साइकोमोटिव डोमेन, कि मैंने एक बच्चे को असाइनमेंट करने के लिए दी 10 बच्चों को और उसी टाइम 3 टीचर्स ने और दे दी, तो साइकोमोटिव डोमेन मीन्स कि एक बच्चे ने सारे टीचर्स की असाइनमेंट टाइम पे कर दी, तो ये उसकी फिजिकल स्किल है. बट उसको समझ आया नहीं आया उसका मतलब नहीं है. अगर उसको टाइम पे भी कर दी और उसको समझ भी आ गया और उसने अच्छी हैंडराइटिंग में भी की, देन आर ऑल दी 3 डोमेन्स आर देयर. साइकोमोटर मीन्स उसने सारी असाइनमेंट्स टाइम पे की, दैट इज साइकोमोटर डोमेन. अफेक्टिव डोमेन मीन्स उसने बड़े प्यार से की, अच्छी हैंडराइटिंग से की, अच्छी पेन बदल के की, दैट इज उसने अपना अफेक्शन दिखाया उसके लिए. एंड कॉग्निटिव डोमेन मीन्स कि उसको नॉलेज भी है या उसने नॉलेज से की, कहीं से यू कैन से ही हैज नॉट सिंपली कॉपीड इट, right? So here we are discussing only about the cognitive domain, just little bit. So as per Bloom, Benjamin, the knowledge level was knowledge comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation, which is revised to remember, understand, apply, analyze, and evaluate. So this is the basic chart. I think this chart is visible to all, right? Yes, sir. तो इसी चार्ट के ऊपर आपका जब सेशन हुआ होगा तो पूरा इसी चार्ट के ऊपर घूमा होगा, बिकॉज दिस इज द मेन यू कैन से पिरामिड ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी. अब इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे. देर आर यू कैन से 6 levels starting from remember to create, right? The first and basic level is remember, जो सबसे बड़ा पिरामिड में लेवल है. This Bloom taxonomy is very well adopted in the schools. हम स्कूल में बच्चे को क्या कहते हैं कि
सबसे पहले बेटा तुमको कुछ समझना नहीं है, तू सिर्फ इसको याद कर ले। इसमें ए लिखा है, बी लिखा है, राम लिखा है, सीता लिखा है, कोई मतलब नहीं है। जस्ट यू रिमेंबर दिस, क्लियर? देन दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी, दैट विद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने इस चीज को याद कर लेना है। जब एक बच्चा चीज को याद कर लेगा, देन वी सेड कि इसमें ये चीज ऐसे होनी थी, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, हम उसको फिर समझाते हैं। दैट इज अंडरस्टैंड। तूने याद कर लिया कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा, आपके 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड मीन्स, अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि मैं उसको बच्चे को समझाता हूं या बच्चा समझता है कि एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है, कि अगर मैं किसी चीज को कुछ कहूंगा तो मैं वो वापस आएगी। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बच्चे को कहता हूं कि अगर तुम अपने दोस्त को कुछ गलत बोलोगे तो वो तुमको गलत बोलेगा, अच्छा बोलोगे तो वो अच्छा बोलेगा। दैट इज दी सिंपली एक्शन एंड रिएक्शन। तो बच्चा समझ आता है, हाँ ठीक है। थर्ड पार्ट इज अप्लाई। अप्लाई मीन्स दैट इसको अप्लाई कैसे करें। हमने कहा कि टेबल पे हाथ को जोर से मारो, हाथ ने रिएक्शन दिया, आपका हाथ भी दर्द होने लगा, उसको समझ आ गया, दैट इज एप्लीकेशन पार्ट, राइट। देन एनालिसिस पार्ट, कि आपने कितना फोर्स लगाया, कितना आपके हाथ पे वापस प्रेशर लगा, दैट इज एनालिसिस पार्ट, क्लियर। इवेलुएट, आपने उसको कैलकुलेट किया। एंड क्रिएट इज समथिंग न्यू, कि जो आपने नया क्रिएट कुछ करना है। सो these are the Bloom's taxonomy level. I think that you have already discussed. So any doubt up to this? So this is again same. Anything we need to discuss in OBE, this Bloom's taxonomy? No, sir. हो सर। Okay. So the next part in this discussion is UGC quality mandate. I think you all are under the University Grant Commission. So the UGC quality mandate said that improve graduate outcome. So the first mandate that UGC have given to all the colleges is कि अपनी जो ग्रेजुएट आउटकम्स है, यू हैव टू इंक्रीज दैट, यू हैव टू इम्प्रूव दैट, इम्प्रूव योर पास परसेंटेज, इम्प्रूव द skills of the student, improve the employability of the students. Then the second mandate given by the UGC is promote student society industry linkage. That you need to promote the student society and industry linkage. So you should make a chain कि स्टूडेंट सोसाइटी को सर्व करें, स्टूडेंट इंडस्ट्री को सर्व करें, इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को लेके जाए। सो देयर शुड बी अ कंप्लीट चेन बिटवीन द स्टूडेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। कोई भी बच्चा कुछ रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च सोसाइटी के काम आए, उसको इंडस्ट्री अडॉप्ट करे, देन इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को फंड करे, सो दैट ऑल द रिसर्च कैन गो ऑन एंड देयर शुड बी अ कंप्लीट लूप। देन train students in the professional and soft skills. Most of the time it has been seen that students have sufficient knowledge. He has very good technical knowledge or she has very good technical knowledge, but during the time of interview, he or she should not able to explain because of the communication problem, because of the confidence, right? So that should also be a part of the UGC mandate, that as a institution, you need to take care of soft skills of the students also, clear? Then I'm not going to talk on the faculty vacancies. Then the achieve NAAC score greater than or equal to 2.5 minimum score से सारे institution को ऊपर बढ़ना ही है। Then what are the objectives of higher educational institutions? Assess to employment and higher education, engage students in societal activities, professional and life skills development, clear? Then ensure updating faculty knowledge and mandatory NAAC accreditation. So we are all here as a part of fourth, ensure updating faculty knowledge. The government put a lot of emphasis that our all faculty should be up to date, right? Then what are the now I am talking about the evaluation of the student. The last part is about the evaluation of the students. So what till now we are taking only the memory based exams.
बच्चे ने याद किया, वी आर ओनली टचिंग the base either two levels, either remember or maximum up to understand level. We are not going beyond that level to check the cognitive level of the students. Whereas as a student of MSc, as a student of MA, as a student of post graduation, as a student of MBA, or even as the final year student of bachelor's, maybe BA, BSc, the students need to be checked for the higher cognitive levels, maybe up to analysis. I'm not saying that go to the create level, but at least you should check the students up to the fourth or fifth cognitive levels. Need continuous assessment. One internal exam, two internal exams are not sufficient. We need to check these students continuously and shift to the student-centric evaluation. From the basic traditional evaluation, we have to shift to the student-centric evaluation. So this is taken from the UGC itself, that 3 modes already we are taking: written mode, oral mode, and practical. That is exam, essay, quizzes, viva presentation. In lab, it is lab work and project. But these are the, you can say, modes. That written mode does not mean only class test, only exams. No, there should be an open book exam, there should be an open notes exams, there should be self test, there should be quizzes, there should be class assignment, home assignment that we are already giving. There should be the annotated by bibliographies, reports, portfolios, dissertations, book review, article review, journal writing, case studies. Means all those comes under the writing mode. There we need to assess each and every students. We have to adopt the different methods of evaluating the students along with our conventional methods, that is the you can say traditional internal examination, external examination. We need to go beyond that. Along with that, I'm not saying that that is not correct, but we need to think other methods also. So whenever you have the time, please go through this you can say strategies, think, pair, share. That is very good strategy that every teachers need to adopt in their teaching. Then KWL, know what to know, learned, right? Rapid fire questions. These are all the oral modes where we can you can say keep the interest of the students. हम बच्चों को इंटरेस्ट जगा सकते हैं, इंटरेस्ट उसमें ला सकते हैं. Then there is virtual labs, then there is co-curricular activities, computer simulations, all that we can do. Then paper presentations, seminars, and SWOT analysis, field assignments, that all. Then as per this table is as per the courtesy to UGC. I have taken it from UGC itself. So this is as per the UGC recommendations. And I request all the faculty members that please engage those students who are in final years of your BSc course or in MSc course in research also. So once they are involved in the research, then they can contribute a lot towards the society as well as you can say to themselves also, right? So assessment types should not be only summative, it should be formative. Along with the quantitative, it should be qualitative, or along with qualitative, it should be quantitative. There should not be only the direct assessment, there should be indirect assessment also. And it should be the written, oral, practical, and integrated modes, right? And to achieve this, it is very important to use the rubrics. I think all faculty members are familiar with the term rubrics. Yes, sir. Yeah. Yeah. Yes, So sir. during each our, you can say, seminar presentation, during our viva voce presentation, whatsoever your final viva, each should be assessed through certain rubrics. It should not be there कि ये बच्चे ने अच्छा बोला, मैं इसके 4 नंबर लगा देती हूँ. ये बच्चा ठीक सा नहीं था, नर्वस सा था, इसके 2 नंबर लगा देते. इसका क्वेश्चन तो ठीक आंसर दिए, लेकिन इसका बैठने का स्टाइल ठीक नहीं. इट शुड नॉट बी लाइक दिस.
the rubrics helps in assessing all the students in a uniform manner. उसमें कहीं भी बायस होने का कहीं भी कोई मैटर आएगा ही नहीं if you are using through the rubrics. So I have given one sample rubrics that is for seminar presentation. Let us say the seminar presentation is of 15 marks. Then I have divided those 15 marks into 3 criteria. Content have 5 criteria, then knowledge and understanding of the students have 5 marks, and then discussion have 5 marks. If the student have presented the good content which is precise and well supported by fact and figure, I will give him 5 marks, right? And if it is partially acceptable, then I will give 3 marks, and if it is incomplete and totally inaccurate, then I will give 1 marks. Similarly for knowledge also. If we make these sort of rubrics, this is very simple rubrics to explain you, but if you use these sort of rubrics, then I assure you that there will not be any problem in evaluating in any of the subject or in any of the oral presentation, and it will helpful in keeping the record too, right? So the technical interventions that we need to add in our study is we need to use certain interactive computer tools, interactive ICT tools in the examination also, because this is not acceptable till now, but when this new education policy will be fully adopted by all the institutions, then the exams will be allowed using the ICT tools. अभी हम जैसे Zoom से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, so in the similar way, in the time to come, we use these ICT tools in the examination also. Many competitive exams, etc., have been done online, and the time is not so far that we are also using these ICT tools in our, you can say, regular examination. Then digital evaluation system. अभी जो आने वाला टाइम आएगा, इसमें हम मार्क्स चेक कर रहे हैं, इसके 2 मार्क्स आगे, इसके 3 मार्क्स आगे. This all will going to vanish, and there will be a digital evaluation system. All the evaluation is through digitally. There would be online assessment and analytics, and each and every you can say question or setting of the question papers, etc., will be through a question bank, right? So in the last, I would request all the faculty members, all the head of the institutions or principals present in that try to adopt OBE system as far as possible in your institute. Try as small as possible so that when the time comes, it should not be there that we are not aware of OBE and ऊपर से एक government का order आ गया है that from now onwards we are shifting to this. There should be an incremental shift, and we all have to adopt for OBE. Then increase internal assessment weightage. Most of the time हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि फैकल्टी इंटरनल में तो अच्छे मार्क्स दे देती है, एक्सटर्नल में बच्चे के मार्क्स नहीं आते हैं. So if we increase our internal weightage, कि बच्चे को पता है कि मेरे इंटरनल मार्क्स for those which are you can say autonomous, जो affiliating यूनिवर्सिटी हैं उसमें तो जो यूनिवर्सिटी ने use or evaluate through rubrics so that each and every student can be evaluated on the same scale. एक ही स्केल पे हर बच्चा evaluate हो. Improve question paper quality. It's very important that use Bloom taxonomy in the setting of question paper. Clear?
जो क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन पूछते हैं उनके वर्ड्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत you can say it should be picked from the proper verbs. It should not be most of the time we use the word describe the process of this, right? Now the word describe have meaning separate for me, separate to you. Up to what extent I need to describe. Clear? So use the proper words, use technology, right? So there are so many tools that are available. There are so many virtual labs that are available. There are so many technologies that are available. So please use those technologies. That would be interactive also. बच्चों को पसंद भी आएगा, बच्चों को अच्छा भी लगेगा, and you will get the good results also, and strengthen the moderation process. Clear? So their moderation process is I think available in all and every institution. Moderation of question paper, moderation of you can say internal quality. So we need to strengthen that moderation process so that overall quality of the students enhance, and ultimately it will lead to the overall enhancement of the institution, and overall it will lead to the growth of the nation, right? So it's not only the growth of the student that is being done by one faculty. हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि we are the nation builders. वो कंसेप्ट फैकल्टी के माइंड से खत्म हो रहा है, लेकिन हमको वो कंसेप्ट रखना है कि हम नेशन बिल्डर्स हैं, हम जिनको बना रहे हैं उन्होंने ही नेशन को बनाना है. प्लीज, राइट? So with these words, I think exactly now this is 3:30. So this picture shows itself that it's not the students that need to climb the stair and reach up to the technology that is waiting for us. We as a faculty members also need to rise to adopt all the latest technologies so that we can guide the students. अगर हमको students को सिखाना है तो हमको students से ज़्यादा knowledgeable होना पड़ेगा, whether it is in subjects or in technology. So thank you everyone once upon. Thanks to the organizer for giving me the opportunity. And I think any questions from your side? Is there any participant who want to ask question from sir? So, sir, you have given so much insightful and fruitful lectures. Thank you very much for so much observation, so much definition you cleared to us for our teaching enhancement. So, thank you very much, sir. Now I would like to invite Neena Vath Pooja ji for present her feedback for this session. Pooja ji, Neena Vath Pooja ji. Yes, ma'am. Ji. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I am Pooja, Department of Pharmaceutics in Vijaya College of Pharmacy, affiliated to Jawaharlal Nehru College, University of Hyderabad. So it's an honor and my privilege to deliver the feedback of this session on behalf of the MMTC Bhagat Phool Singh Mahavishwavidyalaya, conducting FIP 12th batch. Would I like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Rishav Garg sir for such an enlightening and way of delivering the lecture were really informative and well structured, sir. Your explanation about outcome-based education and accreditation, and sir covered vision, mission, and PEO statements of OBE, traditional educational systems and its deficiencies, quality control and quality assurance, continuous quality improvement, hierarchy outcomes, program education objectives, graduate attributes and PLOs, course learning outcomes, and sir given outline of Bloom taxonomy of learning and its domains like cognitive, affective, psychomotor, and UGC quality mandates, objective of higher education objectives, evaluation reform overviews, sir given assessment of rubrics as well as technologies which are used for the exams as well as assessment of students. So sir given all the information about the education outcomes.
Sir given realistic example to understand the session very effectively. Sir's delivery, expertise, and engaging approach made the session extremely insightful. It has equipped faculty with valuable tools to enhance teaching effectiveness and contribute to continuous quality improvement in the institutions. Thank you, sir. Thank you, Sangeeta ma'am and Bhagatpur Singh Mahavishwavidyalaya management to give this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, sir. Dear participants, do anyone want to give presentation after the tea break? Is there any participant who want to give PowerPoint presentation after the tea break? Ma'am, I can give my presentation. Okay, ma'am. So let's have a tea break of 15 minutes. We will gather again at 3:45. Okay, So ma'am. we will start the presentation. Okay.